ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 26. சண்டமுண்ட வதம், சாமுண்டி பராக்கிரமம். இந்த சண்டமுண்டனை வதம் செய்ததால் தான் அம்பிகை சாமுண்டி என்ற பெயர் பெற்றாள். அவ்வாறு புகழ் பெற்றாள். ஸ்ரீமத் தேவி மகாத்மியமும் சண்டி என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. ஓம் நம சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச இத்யாஜ்ஞப்தௌ ததா வீரோ சண்டமுண்டௌ மகாபலௌ जग्मतुस्तरसैवाजौ सैन्येन महतान्वितौ दृष्ट्वा तत्र स्थितां देवीं देवानां हितकारिणीं ऊचतुस्तौ महावीरौ तथा सामान्वितं वचः भाले त्वं किं न जानासि शुम्भं सुरपलार्धनं निशुम्भं च महावीर्यं दुराशाद्विजयोद्धृतं त्वमेकासि वरारोहे कालिका सिंहसंयुता जेतुमिच्छसि दुर्बुद्धे शुम्भं सर्वफलान्वितम्. मतिधः कोऽपि ते नास्ति नारी वापि नरोऽपि वा देवास्त्वां प्रेरयन्त्येव विनाशाय तवैव ते विमृश्य गुरुतन्वङ्गी कार्यं स्वपरयोर्बलम् अष्टादशभुजत्वात्वं गर्भञ्च कुरुषे मृषा किं भुजैर्बहुभिव्यर्तरै आयुधैः किं श्रमप्रदैः शुम्भस्याग्रे सुराणां वै जेतुः समरशालिनः ऐरावतकरचेतुदन्तिधारणकारिणः जैनसुरसङ्घानां कार्यं कुरु मनोगतं वृथा गर्वायसे कान्ते कुरु चतुरासि पिकालपि पश्य शुम्भबलं महत् प्रत्यक्षं सुरसङ्घानां मर्दनेन महोदयं प्रत्यक्षं च परित्यज्य वृतैवानुमिति किल सन्देहसहिते कार्ये न विपश्चित् प्रवर्तते शत्रुसुराणां परमशः शुम्भसमरदुर्जयः तस्मात् त्वां प्रेरयन् त्यत्र देवादैत्येश पीडिताः तस्मात् तद्वचनैः स्निग्धैः वञ्चितासि शुचिस्मिते दुःखाय तव देवानां शिक्षो स्वार्थस्य साधिका कार्यमित्रं परिक्षिप्य धर्ममित्रं समाश्रयेत् देवा स्वार्थपराकामं त्वामहं सत्यमप्रवं भज शुम्भं सुरेशानां जेतारं भुवने ऐश्वर्यं सर्वलोकानां प्राप्स्यसे शुम्भ शासनात् निश्चयं परमं कृत्वा भर्तारं भज शोभनं. व्यासोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा चण्डस्य जगदम्बिका मेघगम्भीरनिनदं जगर्ज पुनरब्रवीत् गच्छ जाल्ममृषा किं त्वं भाषसे वञ्चकं वचः त्यक्त्वा हरिहरादिं च शुम्भं कस्मात् भजे पतिं न मे कश्चित् पतिकार्यो न कार्यं पतिना सह स्वामिनि सर्वभूतानाम् अहमेव निशामय शुम्भा मे बहवो दृष्टा निशुम्भाश्च सहस्रशः कातिताश्च मया पूर्वं शादशो दैत्यदानवाः ममाग्रे देववृन्दानि विनष्टानि युगे युगे नाशं नास्यास्यन्ति काल एवागतोऽस्त्यत्र दैत्यसंहारकारकः वृथा त्वं कुरुषे यत्नं रक्षणायात्मसन्तते कुरु युद्धं वीरधर्म रक्षायै त्वं महामते मरणं पाविदुस्त्याज्यं यशो रक्ष्यं महात्मभिः किं ते कार्यं निशुम्भेन शुम्भेन च दुरात्मना वीरधर्मं परं प्राप्य गच्छ स्वर्गं सुरालयं शुम्भो निशुम्भश्चैवान्ये ये चात्र तव बान्धवाः सर्वे तवानुगात् पश्चात् आगमिष्यन्ति साम्प्रतं क्रमशः सर्वदैत्यानां करिष्याम्यद्य संक्षयं विषादं त्यज मन्दात्मन् कुरु युद्धं विशाम्पते त्वाम् अन्यां च दानवान् सर्वान् हत्वाहं समराङ्गणे गमिष्यामि यथा स्थानं तिष्ठवा गच्छ वा धृतं गृहाणास्त्रं वृथा पृष्ठ
कुरु युद्धं मयाधुना किं जल्पसि मृषा वाक्यं सर्वथा कातरप्रियं व्यासोवाच तयेतं प्रेरितौ दैत्यौ चण्डमुण्डौ कृतान्वितौ ज्याशब्दं तरसा घोरं चक्रदुर्बलदर्पितौ यापि शङ्खस्वनं चक्रे पूरयन्ति दिशो दश सिंहोऽपि कुपितस्तावन्नादं समकरोद्बलि तेन नादेन शक्राध्या जकर्षुरमरा तदा मुनयो यक्षगन्धर्वाः सिद्धासाध्याश्च किन्नराः युद्धं परस्परं तत्र जातं चण्डमुक्ताञ्चरान् देवी चिच्छेदशितैशरैः मुमोच पुनरुग्रान् सा बाणां च पन्नगानिव गगनं चादितं तत्र सङ्ग्रामे विशिकैस्तदा शलभैरिव मेघान्ते कर्षकाणां भयप्रदैः मुण्डोऽपि सैनिकैः सार्धं पपत तरसारणे मुमोच बाणवृष्टिं वैकृत्य परमदारुणः बाणजलं महत्तृष्ट्वा क्रुद्धा तत्राम्बिका वृषं कोपेन वदनं तस्य बभूव कनकसन्निभं कदली पुष्पनेत्रं च प्रकुटीकुटिलं तदा निष्क्रान्ता तदा काली ललाटपलकाधृतं व्याघ्रचर्माम्बरा क्रूरा गजचर्मोत्तर खड्गपाशधरातीव भीषणा भयदायिनी खड्वाङ्गधारिणी रौद्र कालरात्रिरिवापरा विस्तीर्णवदना जिह्वां चालयन्ती मुहुर्मुहुः विस्तार जगना वेगा जगानासुरसैनिकान् करे कृत्वा महावीरां तरसा सा सुरशान्विता मुखे चिक्षेप दैतेयान् पिष्पेशतशनैः शनैः गजान् कण्ठान्वितान् हस्ते गृहीत्वा निददौ मुखे सारोहान् भक्षयित्वा जौ साट्टहासं चकारः तथैव तुरगानुट्रान्स् तथा सारथिभिः सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः सर्वयन्त्यतिभैरवं हन्यमानं फलं प्रेक्ष्य चण्डमुण्डो महासुरो चादयामास दुर्देव चण्डच्छण्डकरच्छायं चक्रं चक्रधरायुधं चिक्षेपतरसा देवीं नानाथ च मुहुर्मुहुः नदन्तं वीक्षतं काळी रताङ्गं च रविप्रभं बाणेनैकेन चिच्छेद सुप्रभं तत्सुदर्शनं तं जगानशरैस्तीक्ष्णैः चण्डीशिलाशिदैः मूर्छितोऽसौ पपातोर्व्यां देवी बाणार्तितो भृशं पतितं भ्रातरं वीक्ष्य मुण्डो दुःखार्तितस्तदा चकार शरवृष्टिं च कालिकोपरि गोपतः चण्डिका मुण्डनिर्मुक्तां शरवृष्टिं सुदारुणम् ईशिकास्तैर्बलान्मुक्तैः चकार तिलशक्षणात् अर्धचन्द्रेण बाणेन ताडयामास तं पुनः पतितोऽसौ हाहाकारो महानासीत् दानवानां बले तदा जहर्षुरमरा सर्वे गगनस्थगतौ यताः विहाय मूर्छां चण्डस् सङ्गृह्य महतीं गतां तारसा ताडयामास कालिकां दक्षिणे भुजे वञ्चयित्वा गदागादं पबन्ध महासुरं तरसा बाणपाशेन मन्त्रमुक्तेन कालिका उत्थितस्तु तदा मुण्डो बद्धं दृष्ट्वानुजम्बलात् आजगाम सुसन्नद्धः शक्तिं कृत्वा करे दृढाम् आगच्छन्तं तदा काली दानवं वीक्ष्य सत्वरं पबन्ध तरसा तं तु द्वितीयं भ्रातरं भृशं गृहीत्वा तौ महावीर्यौ चण्डमुण्डौ शशाविव कुर्वति विपुलं हा जमा आगत्य तामतो वाच गृहाणमौ पशुप्रिये रणयज्ञार्थमानीतौ दानवव्रणदुर्जयौ दावानीतौ तथा वीक्ष्य चण्डिका तौ वृकाविव अम्बिका कालिकां प्राह माधुरी संयुतं वचः वदं मा कुरु सा मुञ्च चतुरासि रणप्रिये देवानां कार्यसंसिद्धिः कर्तव्या तरसा त्वया व्यासोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा कालिका प्राहतां पुनः युद्धयज्ञेति विख्याते खड्गयो प्रतिष्ठिते आलम्बं च करिष्यामि यथा हिंसा न जायते इत्युक्त्वा सा तदा देवी खड्गेन शिरसि तयोः चकर्ततरसा काली पपौ च रुधिरं मुदा एवं दैत्यो हतौ दृष्ट्वा मुदितो वाच चाम्बिका कृतं कार्यं सुराणां ते ददामि यद्य वरं शुभं चण्डमुण्डौ हतौ
यस्मात् तस्मात् ते नाम कालिके चामुण्डेति सुविख्यातं भविष्यति धरातले इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चण्डमुण्डवधेन देव्यां चामुण्डेति नाम वर्णनो नाम षड्विंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।